गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज वन प्रताप सिंह। एक्चुअली उस वीडियो में मैं कार्ड की रेसिपी को वर्किंग नहीं दिखा पाया था, कुछ टेक्निकल एरर्स थे जिसकी वजह से वो वीडियो जिससे मुझे कट करना पड़ा। चलिए पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आपको कार्ड की एसी दिखाता हूँ, ठीक है ना। कैसे कार्ड की एसी असेंबल होती है, कहाँ कंप्रेसर होता है, कहाँ कंडेंसर होती है, कहाँ इवेपोरेटर होता है, कहाँ थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व होती है, कैसे एयर रिसर्कुलेट करता है, क्या चीज होता है, वो आप एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। फिलहाल मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं, आपको मैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ साइक्रोमेट्रिक चार्ट एंड शो द वेरियस टर्म्स ऑफ इट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट को बनाइए और उसके विभिन्न पदों को प्रदर्शित कीजिए, क्या दिखाइए। ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस साइक्रोमेट्रिक रिलेशंस। विभिन्न साइक्रोमेट्रिक संबंधों को भी या संबंधों का भी वर्णन करें, विभिन्न साइक्रोमेट्रिक संबंधों का भी वर्णन करें। राइट द शॉर्ट नोट्स और दूसरा क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला, सेंसिबल हीटिंग एंड कूलिंग, हीयर तापन और शीतलन। दूसरा मतलब इसका सबसेक्शन दूसरे क्वेश्चन का बी, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, आर्द्रीकरण और निरार्द्रीकरण। तीसरा यानी सी पार्ट, एडीपी एंड एसएचएफ मतलब अपर्टस डी पॉइंट एंड सेंसिबल हीट फैक्टर। तो अपर्टस डी पॉइंट की यूनिट क्या होगी, उपकरण औसत बिंदु, और ये उष्मा गुणक, और डी पार्ट है बाईपास फैक्टर, उपमार्ग गुणक। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आई एम सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन होगा, मुझे एक मिनट में अगर आप समझ लेंगे सामने इसको एडिट कर पाऊंगा। खैर समझ लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हीट लोड एंड इट्स टाइप। उष्मा भार और इसके प्रकारों का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है ये तीसरा और चौथा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्प्लिट एसी विद नीट स्केच। सचित्र स्प्लिट एसी की क्रियाविधि और संरचना का वर्णन करें। पांचवा क्वेश्चन है, चौथा नहीं पांचवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंडो एसी, है ना। तो विंडो एसी की क्रियाविधि और संरचना का वर्णन करें। तो बच्चों इसको मैं इसके पिछले नहीं प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही प्रेस करूंगा वो वीडियो स्टॉप हो जाती है, इसका फंक्शन। और पीपीटी की स्लाइड भी स्टेप से ही वो मतलब बैक होगी, तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। खत्म करने के पहले मैं जैसा भी कहा था आपको कार्ड की ऐसी वर्किंग दिखा देता हूँ, कहाँ क्या होता है वो आप देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। एसी की वर्किंग जानने के लिए आप 9वां चैप्टर, इसका जो 9वां यूनिट है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन आरईसी, उसमें आप विंडो एसी स्प्लिट एसी देख लेंगे, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको बोर नहीं होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए फिलहाल इसके समझ। Hi guys, welcome back. Today I'm just going to explain how the air conditioning system works. So this car now we're looking at an outside temperature of 30 degrees, pretty hot. So now just going to look at the engine where the compressor itself sits. So now the engine is just starting up, you can see the belt there which drives pulling up the compressor. So this is the actual air conditioning compressor, and just going to turn the aircon on, and once the aircon has been turned on, then see that the piston inside the compressor will pump in, which will then compress gas which is inside the system. So at this particular point, you can see here that the gas is around about 0 degrees C, and the pump goes bar pressure inside. Just bear in mind that we've got our system outside temperature is 30 degrees. Generally, if you're doing testing on the system, you'll find that you've got about 21% degrees outside. So just bear that in mind. The outside temperature has a massive effect on the actual pressures. So
once this compressed gas then is compressed by the compressor itself, it's then start to exit the compressor, and you can see how the gas has actually reached approximately 85 C, around about 60 bar of pressure. So it's extremely hot gas, and 60 bar. Hydrogen bar of pressure. So once this gas now leaves the compressor, it makes its way over to denser. It's also got filtered by denser itself. So as it kind of enters the top of the denser, you see the temperature increases to 85 degrees, about 60 bar of pressure. Now the temperature drops to those degrees. The temperature radiator. You see the top goes right down to approximately 55 degrees. Still maintaining the same amount of pressure. Now see the actual turn on gas back into the actual temperature change. So that's the bottom denser. So this radiator is just reducing the temperature to turn that gas back into so once this liquid will flow through the actual dryer, the dryer is there to stop gas it goes up to bulkhead, use the thermal expansion valve. So this thermal expansion valve is kind of the halfway point of the system. So between the expansion valve and the actual compressor itself, kind of two parts of the system. This particular side is what's known as the high pressure system, and the other side is the low pressure system. So running approximately 60 bar amps of bar pressure. The high pressure system running approximately 10 to 15 bar of pressure at absolute temperatures. Low pressure side so inside this thermal expansion valve, there's a very small hole which is adjusted by thermostat, wax thermostat. Inside the unit is a small hole that changes the pressure. High pressure side is low pressure. This particular is liquid at high temperature. As this liquid is able to escape through the small hole, then it turns into gas. Oil. So this oil drops the temperature and the actual itself into gas vapor. See the pressure dropped to approximately alarm as it passes through to evaporate. Again, this looks similar to a radiator. The gas travels through here, and the radiator heats the fan and hot air from the outside over and below. So that cold gas wrapped starts to compress itself again. That's the press. तो बच्चों ये हमारा कंडेंसर यूनिट है ना, ये हीट को रिजेक्ट करेगा। ये हमारा इवेपोरेटर यूनिट है जो हीट को ऑब्जर्व करेगा। यहाँ से हमने फैन ब्लोअर लगाया हुआ है जो इस इवेपोरेटर में जो कूलिंग
रेफ्रिजरेंट है या चिल्ड रेफ्रिजरेंट या कोल्ड रेफ्रिजरेंट है, तो वहाँ से कोल्ड एयर को सर्कुलेट करके हमारे कार के चैम्बर में भेजेगा, ठीक है ना। फिर हमारा कंप्रेशर है, कंडेंसर है, इवेपोरेटर है ना, या थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा। तो वर्किंग सबकी वही है, वर्किंग प्रिंसिपल वही है, और बेसिक से फंक्शन कुछ अरेंजमेंट अलग है। मुझे अरेंजमेंट आपको दिखाने थे, अरेंजमेंट मैंने दिखा दी, सिंपली दिखा दी, ठीक है। फंक्शन आप 9th चैप्टर में देख लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने विंडो एसी, स्प्लिट एसी, कार एसी, सेंट्रल एसी सिस्टम, राउंड एयर एसी सिस्टम आपके सिलेबस का पार्ट कवर कर दिया। विंडो एसी और स्प्लिट एसी आप अगले चैप्टर में देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही है दोनों, ठीक है ना। पूरी वर्किंग समझाया हमने, ठीक है। तो चलिए, तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, और इस तरह ये चैप्टर खत्म हो गया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मुझे कराने हैं, तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे है, कैसे साइक्रोमेट्रिक चार्ट से क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे करते हैं, क्या ड्रॉप प्लॉट करते हैं, सब कुछ। तो मैं एक या दो क्वेश्चन से बता दूँगा, अलग से वो वीडियोस बना के अपलोड कर दूँगा। फिलहाल आपका 98 to 99% सिलेबस का खत्म होता है, 1% बचा है, 1 या 2% जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम कर लेंगे, ठीक है। उसको करके मैं अपलोड कर दूँगा। तो टोटल 9 पार्ट होंगे इस चैप्टर के, यूनिट 8 के 9 पार्ट, ये 8वां पार्ट का 9वां पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना।